Good morning, everyone. Welcome to Daily News Analysis by Tathastu ICS. So today, for 27th July 2026, we are going to see certain topics that will be reflecting in our UPSC paper from the newspaper. Okay. So good morning Prachi, good morning Bhushan, good morning Suman. चलिए, so आज क्या क्या है वो हम देखने वाले हैं, ठीक है? So the first one is about हाई पावर टास्क फोर्स, ठीक है? सो हाई पावर टास्क फोर्स अभी okay, recently the education minister have resigned from his business, and right now we are having a new education minister, right? So after that, okay, so after his resign, so prime minister have announced, okay, good morning Dharam, good morning Deepti, good morning Shanu, right? Okay, so prime minister have announced there will be appointment of high powered task force where we would be able to anticipate, where we will be able to understand how the papers are being leaked, okay, and how it can be rectified, okay? Solution भी हमें देखने वाले हैं, so उसके लिए high power task force अभी appointment हो गया, ठीक है? So we are going to see who are all the members and how it is working, ठीक है? Good morning Arvind. So this will be impacting in a GS2 paper, okay, पॉलिटिक्स स्ट्राइट अवे, क्योंकि पार्लियामेंट के थ्रू और वी आर प्राइम मिनिस्टर इज अपॉइंटिंग समथिंग रिलेटेड टू द mechanisms and everything that will be reflecting in our GS2 paper. Okay, good morning Vikas. And the second one is about the editorial written by Shashi Tharoor. Okay, okay, so the editorial has been written by Shashi Tharoor, and there he have mentioned that, okay, there he have mentioned that we should neither depend upon US nor we should depend upon China, ठीक है? So यही है चीज. So we should not be like just understanding the US unreliability, ठीक है? The way they are unpredictably changing and the stance they are taking. So because of that, we should not be going and surrendering our certain things to China, ठीक है? So that is the article based upon. So we will be seeing what are all the solutions that Mr. Shashi Tharoor has given, and on what basis the negligence, okay, sorry, on what basis. Am I audible, Vita? Am I audible right now? Is my voice is okay? Okay, chaliye. So yeah, abhi what they have told us is like we should neither go with US and we should not being so much dependent on China as well, okay? So for that, what India should do, all those things have been mentioned in the article that we are going to see, okay? The third one is about ICC, which is International Criminal Court, okay? So we are just going to see about it, okay? Small glimpse about it, okay? Not much, because एक prelims factor, India is not a signatory of this. Okay, thank you Shannon, thank you Bhushan. So India is not a signatory of Rome Statute based upon which ICC have been made. Okay, we are just going to understand what the thing is like, because these kind of events and these kind of things will be reflecting on our GS2 paper IR when it comes to the foreign policy making. Okay, because when there is a global event or when there is a conflict in the globe, so that time we are necessary to alter our foreign policy also. So in that case, we are going to see it. So again, it is in the GS2 IR perspective, and here it is again the IR, and also we are going to see certain things how we are dependent on economy matters also when it comes to India-China relations. Okay, clear? Chaliye. So we are moving to the next one. Okay. First one, Nilekani to lead high-powered task force on exam reform announced by Prime Minister. ठीक है? So generally अगर हमें पता है, right? अभी हमारी यूनियन एजुकेशन मिनिस्टर हैव रिसाइंड, मिस्टर धर्मेंद्र प्रधान, राइट? सो जनरली हमें पता है वो अगर प्राइम मिनिस्टर हैं, ठीक है,
So he will be giving the advice to president, to whom should be given the ministries and everything, right? So not prime minister will be appointing, he will be giving the advice to the president, and the president will be doing all the things. Prime minister will be directly appointed by president, right? So these are the things. So he have resigned, so now and another education minister have came, and we have given the additional duty of education ministry, right? ठीक है. So अभी हमें इसमें क्या देखने वाले हैं, बहुत छोटी सी चीज है, वेयर ओके हमारी इंडिया का वो एग्जाम पेपर लीक्स इज वेरी कॉमन नाउअडेज, राइट? बहुत ज्यादा पेपर्स लीक होते जा रहे हैं, राइट? सो उसके लिए हमें क्या करना है, वी हैव टू फाइंड द रूट कॉज, कहाँ से पेपर लीक्स हो रहे हैं एंड वेयर इट इज बीन कनेक्टेड, हाउ पीपल आर गेटिंग द पेपर्स एंड एवरीथिंग, राइट? सो उसके लिए हमारी एक टास्क फोर्स अभी अपॉइंट हो गया है, ठीक है, हमारे प्राइम मिनिस्टर ने उसको अपॉइंट किया है, and we have 5 members in that. Okay, it have been headed by Nilakini, who have been worked in Aadhaar and also the UPA mechanisms of India. So he is a like well read, and also he is a experienced in the technology based things and everything. Okay, so it have been made that key, so he is going to lead, and main 4 more people are going to as a members, they will be in the committee, and they will be understanding like kahan se ho raha hai, kyunki it is not about one particular section where it will be getting leaked papers, right? There are multiple areas, right? So either contractors जिनको हम एग्जाम का कॉन्ट्रैक्ट दे दिया है, उनसे हाथ से वो निकल सकते हैं, राइट? क्योंकि क्वेश्चन पेपर सेट करने वाले से वो लीक कभी नहीं होता, ठीक है, बिकॉज देयर विल बी डिफरेंट पर्सन्स हु आर वर्किंग अंडर creating the questions, and it will be like reviewed and reviewed for 2-3 times, at least it will be reviewed, and the changes will be made. So वहां से होने के लिए there is no majorly loophole वहां पर नहीं है, but we are looking into the other possibilities where it is getting like leaked or something, ठीक है? So that is what the thing is going to investigate. Based upon that, we are going for the mechanisms where the technology based mechanisms, and also हमारे OMR में हम देख सकते हैं, right? There is a barcode, so same kind of mechanisms or any other mechanisms that will prevent paper leaks, and we would be able to understand particularly where it have been happened. So ये चीज़ के लिए okay, ये solutions निकालने के लिए एक कमेटी बना गया है, ठीक है? उसमें हम देखेंगे, just a second. Okay. So Mr. Neil Kenny will consist of, okay, the committee will be headed by Mr. Neil Kenny and will be consisting of former ISRO chairman Somnath, former IB director Tapan Deka, and IIT Madras director Kamkoti, and former education secretary Anita Karwal. So, and logistic experts Amrit, okay, Amrit Lalmina. So these are the people who are going to कमिटी, ठीक है? एक बार देख लेना, जरूरत नहीं है कि इन लोगों का नाम रट्टा करने के लिए, ठीक है, बट जस्ट अंडरस्टैंड इट. the members consist of how many, the committee consist of how many members and everything, ठीक है? बेसिक चीज, why their qualification यहाँ पर हम देख रहे हैं, because we are forming a strengthened committee, right? So वहां पर हमें क्या देखना चाहिए था, we have to make sure कि how qualified our committee members are, ठीक है? So that the policies or else the continuous system, how it is going to be working better, that for that only we are going to see this, ठीक है? So ये याद रख लेना, इसके अलावा ज्यादा उसमें कुछ है नहीं. ओके, सो एक्सक्यूज मी, ठीक है, जस्ट रीड अबाउट इट. इन लोगों ने इसमें बहुत एक्स्ट्रा चीजें दिए हैं कि मिनिस्टर, द प्राइम मिनिस्टर हैव अनाउंस्ड दैट those who are guilty they will be punished, and they are punished. All these things have been mentioned in it. That is not necessary for us. Just keep it in mind. हमारी न्यू एजुकेशन मिनिस्टर कौन है, जस्ट फॉर अंडरस्टैंडिंग, ठीक है? और इसके अलावा हु इज गोइंग टू हेड द कमिटी एंड व्हाट आर ऑल देयर थिंग्स, ठीक है? चलिए नेक्स्ट वन चलते हैं.
Next one is about do not surrender to China and do not depend upon the US, right? सो यहाँ पर दो सेक्शन है, वन इज यूएस एंड वन इज चाइना, राइट? सो यूएस के बारे में हम डिपेंडेंसी नहीं रख सकते हैं, एंड इन इवन द recent days if you are able to see like the West Asian conflict and many other supply chain disruptions, all these are happened, but we are trying to correlate with US foreign policy and we are moving little closer with यूएस nowadays, राइट? सो इंडिया का फॉरेन पॉलिसी है ना, थोड़ा बहुत इधर उधर ऐसे छोटा सा वो चीज हमें देख पाएंगे कि इट विल बी लाइक ऑलवेज इधर हम हमारी imports और financial things, okay, the economical dependence over China is little. Mic problem? आवाज आ रही है मेरी? Am I audible? ठीक है, so we will be having what, we will be having a economical dependence on China in asymmetric dependence, ठीक है, क्योंकि China say we are importing so many things and we are not exporting so much of things to China. So there where we are dependent on critical imports also, right? And also we have so much of issues, okay? Border issues है हमारे पास, और इसके अलावा we are much dependent on China when it comes to the critical goods and the input goods, ठीक? So these are the things why it is said that ki we should not be dependent upon China anymore further, okay? And we have to slowly, gradually, we have to strengthen our India's production and manufacturing. Along with that, we have to make sure we are resilient from inside, okay? So yes, critical import मतलब critical ओके यू आर टेलिंग, ओके ठीक है, क्रिटिकल इंपुट क्रिटिकल मिनरल्स होगा, ठीक है, हमारी मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्री के लिए जो वो इम्पोर्टेंट इनपुट्स होगा, सो वो वगैरह चीज हम ज़्यादा से ज़्यादा चाइना से इम्पोर्ट कर रहे हैं, एंड समवेयर और द अदर इट इज रिफ्लेक्टिंग इन आर ग्रोथ एज वेल, ठीक है? ग्रोथ कहाँ से? क्योंकि बिकॉज वी आर नॉट हैविंग दैट मैन्युफैक्चरिंग industries within India, we are importing it from it. So once we are importing those goods and we are getting the final goods and we are exporting it, वहां से हमें ये चीज मिल रहा है, ठीक है? So these are the things that is right now going on. So US के बारे में हमें क्यों भरोसा नहीं कर सकते? Because we are having a reliability issue with US, ठीक है? We don't know how and when they will be changing. Right now in the recent pattern they are more close with Pakistan, okay, and even they are more they are into like H1B visa titan have happened, okay, and along with that they are focusing on their economical conditions to be better, and they are refining all our Indians also, okay? So the job opportunities, the education opportunities by through tightening this H1B visa, all these are like interrelated things, so we don't know like how and when we are going to end up with US, right? So इसलिए हमारी military dependence or also the defense equipments dependence should be gradually lower down, okay? And also the dependence on China when basically on the imports and also the goods, we have to reduce it, okay? So there are certain things that have been mentioned here why we have to reduce things. अभी US को साइड पे रख लेते हैं, पहले we will be seeing why China के साथ हम नहीं डिपेंडेंस को क्यों हम कम करना है, ठीक है? सो द फर्स्ट थिंग इज अबाउट दिस कलर इज विजिबल, ठीक है? सो चाइना इंडिया का रिलेशन अगर हम देखेंगे तो देर आर सर्टेन थिंग्स, ठीक है? एज आई हैव टोल्ड यू देर आर क्रिटिकल इंपोर्ट्स आर देयर, राइट? एंड अलोंग विद दैट वी हैव सर्टेन चैलेंजेस टू गो विद चाइना. पहले चीज, इंडिया चाइना के साथ जो बॉर्डर इशू है, ठीक है? सो बॉर्डर इशू इज द फर्स्ट थिंग जहाँ पर हमारी LAC, राइट? सो अरुणाचल प्रदेश के बारे में, और इसके अलावा द LAC लाइन हमेशा प्रॉब्लम में ही रहते हैं इन द इनफिल्ट्रेशन ऑफ देम, राइट? सो इट इज समथिंग लाइक छोटे छोटे जहाँ से इन लोगों ने पकड़ेंगे, इट इज नॉट लाइक वन forceful confrontation or one big confrontation, but instead they will be moving inch by inches. आगे आते आते क्या करते हैं इन लोगों ने? they will be doing it as a like they will be acquiring all the lands, right? So whenever we are trying to, actually this editorial
has been proposed because certain analysts and certain businessmen, they have told that US का predictability बहुत uncertain है, right? And it is nearly impossible to predict US how it is working and things. So अभी US के साथ हम dependence कम करना पड़ेगा and we can go with China, क्योंकि चाइना देयर इंटरप्रिटेशन ऐसे हैं, अगर हम चाइना के साथ बहुत ज़्यादा लाइक ट्रेड के थ्रू और थ्रू इकोनॉमिकल टर्म्स इफ वी बिल्ड अ रिलेशन, it will solve two problems. One is we will be having economic resilience also, मतलब गुड रिलेशंस, ओके, सप्लाई चेन भी हमारी बेटर होगा, और इसके अलावा वी विल बी इवेंचुअली एबल टू सेटल डाउन दोस border disputes as well. Okay, this have been mentioned by those analysts, but Shashi Tharoor here in this article, he is saying that we cannot go with China because of certain issues, which one among that is border issue. First thing, because whenever India try to be very friendly, or whenever India try to be much polite with China, the eventually they will be coming with a border or security issue. Okay, so that is what the major issue. In 2000, recently in 2020 also we had a issue with them. Okay, so the first thing is about the border issue, and second thing is about, okay, the economic dependence. Okay, so the economic dependence here is a strategical issue for India, क्योंकि ऐसे the imports are much, okay, to be honest, literally China is having large amount of surplus when it comes to Indian profit. Okay, so जब इन लोगों ने अपना चीज यहाँ पर इम्पोर्ट कर एक्सपोर्ट करते हैं, एंड देयर प्रॉफिट सरप्लस अलोन इज अराउंड नियर $100 billion. Just imagine it. And we as a India, okay, we are importing things and the exports from India is very less. So asymmetric nature हमारे पास है between India and China, so which is making that India being economically dependent on whom? The China. क्रिटिकल इनपुट्स हैं, ठीक है, क्रिटिकल इनपुट्स हैं, द प्रोडक्ट्स नेचर आर वेरी इंपॉर्टेंट फॉर इंडिया, ठीक है, हमारे मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर्स का ग्रोथ के लिए वो दैट इज इम्पोर्टेंट. बट द थिंग इज लाइक द ओवरऑल द लॉन्ग टर्म डिपेंडेंस विल बी एट गिविंग अ नो प्रॉब्लम रश्मि, गुड मॉर्निंग, ठीक है. सो द लॉन्ग टर्म थिंग्स विल बी गिविंग अ definite solution, definite issue of what this strategic autonomy will be completely erased. ठीक है, सो हमारी इम्बैलेंस ट्रेड और इसके अलावा हमारी स्ट्रेटेजिक autonomy भी एक बार खत्म हो जाएंगे when we are going for more economic dependence. so चाइना अगर, ठीक है, इफ यू आर लाइक फॉर शॉर्ट टर्म के लिए हम ये सोच के, ठीक है, अभी शॉर्ट टर्म इश्यूज हैं यूएस के साथ, सो व्हाट वी विल डू, वी विल गो फॉर चाइनीज प्रोडक्ट्स और चाइनीज रिलेशंस. ओके, उस टाइम अगर हम वहां पर जाते हैं, ठीक है, शॉर्ट टर्म के लिए वो ठीक रहेगा, बट लॉन्ग टर्म में हमारे, ऐसे हैव टोल्ड यू, स्ट्रेटेजिक इंपॉर्टेंस, एंड वी हैव टू बी लाइक सरेंडर होने वाली टाइम आ जाएगा when it comes to if there is any global disruptions or if there is any conflict. Okay, small stringent relations also will create a huge impact in Indian economy. ठीक है, अगर इन लोगों ने supply chain stop कर लिया, ठीक है, और इसके अलावा if they have stopped any imports to India, sorry, exports to India, then it will become a huge problem, right? So that is what the major thing we are talking about. And the third one is about it can be weaponized. Okay, सो यहाँ पर ट्रेड इम्बैलेंस हो रहा है, राइट, और इसके अलावा वो ट्रेड इम्बैलेंस को इन्होंने वेपनाइज भी कर सकते हैं, जहाँ पर व्हेन इंडिया इज गोइंग थ्रू एनी नीड, ओके, इफ इंडिया इज गोइंग थ्रू एनी इशू, वहां पर क्या हो जाएंगे, इन लोगों ने ये सप्लाई चेन को स्टॉप करेंगे, नहीं तो दे विल बी लाइक मेकिंग द टू फॉल डाउन द इकोनॉमी, दे कैन स्टॉप द exports, so that India's economy and the manufacturing sector will be suffering, right? So वो weaponization के बारे में भी we are little thinking about it, why we should not be going for China. ठीक है, and the other thing have mentioned by Mr. Shashi Tharoor is, fourth one is about the reciprocation. Okay, so as the analyst says, right, so if we go for a better relation, if we go for better opportunities with China, they might give us a short term economical things will be
maintain, right? And along with that we would be able to go for eventually border settlement as well. But we don't have any promises that China will be reciprocating in the same way as India do, right? So that is what one of a major issue here we are talking about. What चाइना अपना इम्पोर्ट को बढ़ाते बढ़ाते, ठीक है, एक्सपोर्ट्स को बढ़ाते बढ़ाते इंडिया विल बी बिकम अ completely depend upon Chinese products, ठीक है. At that point of time what they come and ask us like कि इतना area of LAC you have to give it to China, or is there is any strategical movement they take up to capture those LAC area, then it will become a very big impact on India, right? So that is why the Mr. Shashi Tharoor is saying neither China nor US we have to be dependent upon, ठीक है. समझ आ रहा है चीज. Majorly they have focused upon whom the Chinese things only, ठीक है. So what India has to do right now, we have understood like what is the problem, right? How this आर्टिकल हैव बीन इवॉल्व बिकॉज उन्होंने बताया था कि यूएस से हम दूर हट करके चाइना के साथ आना है, बट चाइना से क्या क्या प्रॉब्लम है वो हमने देख लिया, राइट? सो अभी इंडिया क्या करना पड़ेगा, इंडिया को कुछ चीजों करना पड़ेगा. पहले चीज, ठीक है, शॉर्ट टर्म के लिए वी शुड बी हैविंग सम डिपेंडेंस, वी कैन नॉट डिनाई दैट. फर्स्ट थिंग वी हैव टू कीप दैट इन माइंड. एंड सेकेंड थिंग व्हाट इंडिया हैज टू डू, इंडिया हैज टू मीनवाइल okay larger or extend its multi-dimensional relations, okay? So multilateral trades, and along with that partnerships have to be multilateral, different countries, okay? And the supply chain has to be resilient, and for that we have to go for the alternative supply chains, okay? Not only through China, not only through US, we can go for other areas जैसे कि हमने मलेशिया, ऑस्ट्रेलिया, यहाँ से हम सप्लाई चेन को बिल्ड कर सकते हैं, ठीक है. So if there is any war and there is any conflict in West Asian area, Strait of Hormuz through के साथ हमारे पास नहीं आ रहा है, we have to go for the Red Sea through Suez Canal also. So we have to go for the alternatives. Clear till now? And other solution would be, ठीक है, one of the other solution would be diversify भी करना पड़ेगा हमें, ठीक है. So the dependence को कम करने के लिए, if we don't have the natural resources, or if we don't have the resources within ourselves, what we have to do, we have to keep that in mind कि we have to diversify it, so the dependence will be eventually cut down, we will be having multiple suppliers, ठीक है. So this is what the major solution that have been given by Mr. Shashi Tharoor as well, and it is practically workable also, ठीक है. So ये चीज आप याद रख लेना, डिपेंडेंस ऑन चाइनीज प्रोडक्ट शुड बी रिड्यूस्ड. एग्जैक्टली भूषण, सो दैट इज व्हाट वी आर टॉकिंग अबाउट, ठीक है. So the economic actors here they have talked about the how it have been the problems are been arose, ठीक है. and इसके अलावा यहाँ पर reciprocity we have talked about like how China will be reciprocating with India, and also there are certain things where they have mentioned, okay, so what India should be doing it, okay. So these are the things that they have like mentioned, okay? So the weaponization में एक और चीज, for over a decade China has, okay, weaponized its veto at the UN Security Council to shield Pakistan based terrorist organizations. So these are the things, okay. And also it has blocked India's legitimate aspirations for permanent membership in the UNSC and membership in the nuclear supplier groups. We know nuclear supplier groups हमें अभी तक वो बैन करके रखा है. So the यूरेनियम दैट विल बी गिवन ओनली फॉर द सिविलियन पर्पस, वो भी अभी आया है, ठीक है. सो इसके पहले वो भी नहीं है, एंड इंडिया कैन नॉट गेट द पोटेंशियल यूरेनियम, ठीक है. सो दैट विल बी यूज्ड इन द न्यूक्लियर रिएक्टर्स एंड द न्यूक्लियर टेक्नोलॉजीज में हो सकते हैं, उसमें वो वाला यूरेनियम हमें नहीं मिलेगा. एंड इसलिए इंडिया थोड़ा सा पुश किया था एनएसजी थोड़ा सा सेटल डाउन करने के लिए, बट वहां पर भी चाइना ने इन्फ्लुएंस करके दे हैव डिनाइड इंडिया दोस एक्सेसेस, ठीक है. सो ये सारा चीज हमें याद रखना पड़ेगा. समवेयर और द अदर they are protecting their sovereignty, okay, China, and it is protecting its stages, and it is not letting India to get enter into any other global stages in a higher designation, ठीक है. ये समझ आ रहा है आपको? परमानेंट मेंबर में यूएनएससी में भी इन लोगों ने मना कर दिया. So these are the things what doing with us, and we cannot go and depend upon them, and we cannot surrender our economical terms with
चाइना, ठीक है. सो दिस इज आर द इश्यूज दैट वी आर गोइंग विद इट. सो इंडिया को अभी डाइवर्सिफिकेशन और सप्लाई चेन ऑल्टरनेटिव्स, इसके अलावा एक मेन चीज करना पड़ेगा फॉर लॉन्ग टर्म रेसिलियंस एंड लॉन्ग टर्म सस्टेनेबिलिटी. इंडिया को खुद को स्ट्रेंथन करना पड़ेगा, अपना मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर्स, ओके. एंड ऑल्सो वी हैव टू फाइंड आउट द रिसोर्सेज दैट प्रेजेंट इन इंडिया. जैसे कि हमारी यूरेनियम के बदल टाइटेनियम हमें है, हमारे पास है, वो उसको प्रोसेस करके हमें मिल रहा है ना. वैसे वी हैव टू वर्क अपॉन थिंग्स. सो जो रिसोर्सेस है उससे बेस्ट आउटपुट देना पड़ेगा. और व्हेन इट कम्स टू द टेक्नोलॉजी एंड थिंग्स, go for collaboration, learn and bring those technologies back to India. ठीक है. So these are the things I have written here. They have given those border issues also. ठीक है, गलवान में है, right? And also there are many other incidents they have quoted here. So just read about it. ठीक है. अभी चाइना भी, यूएस भी प्रो पाकिस्तान है, ठीक है. दे आर मोर इनटू रिलेशन विद पाकिस्तान बिकॉज उन लोगों को इंडिया ग्रोथ कर, इट इज नॉट अबाउट लव ऑन पाकिस्तान, टू बी ऑनेस्ट. इट इज अबाउट इंडिया को उन लोगों को ग्रो नहीं करना है, एंड दे वांटेड द प्रॉब्लम्स टू बी सराउंडेड बाय us. ठीक है. So that is what the major thing. So we cannot depend upon both the countries, neither of the countries, not only US or China. We should not be depend upon either of the countries because that will be eventually giving a long term issues. ठीक है. Clear till now? This is the crux of this editorial. Please do read about it, you will get it. ठीक है. चलिए नेक्स्ट वन चलते हैं. अभी तक कोई भी दिक्कत है? Is there is any doubt that you have when it comes to this article? Okay, chalo, if there is any doubt please let me know, otherwise we will move to the next one. ठीक है. ओके, थैंक यू अरविंद. चलिए नेक्स्ट वन में चलते हैं हम. सो डाइवर्सिफिकेशन के लिए वी कैन गो फॉर मेनी कंट्रीज लाइक यूरोप होगा, ठीक है, एंड साउथ ईस्ट एशियन कंट्रीज होगा, उनके साथ हम डाइवर्सिफिकेशन के लिए जा सकते हैं, बट कीपिंग इन दैट माइंड डिपेंडेंसी कहीं से भी नहीं होना चाहिए. ठीक है. थैंक यू प्राची. चलिए, तो नेक्स्ट वन इज अबाउट Netanyahu fires bags at Mamdani and calls ICC charge bogus. So यहाँ पर क्या इशू है अगर आपको देख पा रहे हैं तो, ठीक है. सो क्या हो गया, हमारी इसराइली मिनिस्टर, वन ऑफ द मिनिस्टर, ठीक है. सो इसराइली प्राइम मिनिस्टर, ही वाज गोइंग टू न्यूयॉर्क फॉर सर्टेन यूएन असेंबली एंड द टॉक्स एंड एवरीथिंग. ठीक है. सो प्रॉब्लम यहाँ पर ये है कि वी नो इसराइल पैलेस्टीन इश्यूज, राइट. सो उसके थ्रू आईसीसी ने इसको अरेस्ट वारंट दे दिया है इसराइली प्राइम मिनिस्टर मिस्टर नेतन्याहू को. ठीक है. सो प्रॉब्लम वहीं पर ये है, लाइक अरेस्ट वारंट हाउ इट हैव बीन गिवन, एंड मदामनी इन्होंने बताया था कि जब भी उन्होंने आएंगे आईसीसी अरेस्ट वारंट के साथ उनको अरेस्ट हम कर लेंगे. ठीक है. सो वी आर जस्ट गोइंग टू अंडरस्टैंड व्हाट इज आईसीसी, ओके, एंड हाउ इट वर्क्स एंड एवरीथिंग. ठीक है. सो एंड इसके अलावा इंडिया का जो भी स्टैंड है और इंडिया का जो भी पोजीशन है दैट वी आर गोइंग टू सी हियर. ठीक है. सो आईसीसी इंटरनेशनल क्रिमिनल कोर्ट वो 1998 में, ओके, थ्रू रोम स्टैट्यूट के थ्रू ये बना दिया है. ठीक है. सो इट इज गोइंग टू बी अ परमानेंट इंटरनेशनल कोर्ट एंड वेयर द इंडिविजुअल्स, ओके, हु हैव एक्टेड अगेंस्ट ह्यूमैनिटी, war crimes, okay, and also there are certain things when it comes to war time पे जो जो इन्होंने inhuman activities किया है, और इसके अलावा if they have gone for any genocide kind of things, so based upon these genres they will be arrested. ठीक है. The problem with ICC is ICC के लिए separate पुलिस पेट्रोल नहीं है, जहां पर उन्होंने स्टेट्स को ही डिपेंडेंट करना पड़ेगा फॉर गिविंग फॉर गेटिंग द पीपल अरेस्टेड इन एवरीथिंग. ठीक है. पुलिस का दे डोंट हैव सेपरेट पुलिस, ओके, क्रिमिनल कोर्ट के पास सेपरेट पुलिस नहीं है. दे हैव टू इवेंचुअली डिपेंड अपॉन हुम, द स्टेट्स ओनली. ठीक है. टू अरेस्ट देम एंड टू सरेंडर देम इन द इंटरनेशनल कोर्ट. ठीक है. दिस इज द मेजर थिंग. सो यहाँ पर इनको नेतन्याहू को क्यों इन लोगों ने अरेस्ट करने चाह रहे हैं, बिकॉज अकॉर्डिंग टू रोम स्टैट्यूट, ठीक है, इसराइल तो रोम स्टैट्यूट में तो नहीं है, neither India nor Israel. ठीक है. So but when it, how ICC can arrest him,
because the issue that have been arose is between Israel and Palestine, right? So Palestine may it have been mentioned that Palestine have ratified this Rome Statute, and if there is any issue, okay, in that case, if there is any issue with the Palestine, the ICC will be coming into resolution, right? So वहां पर क्या हो गया था, आईसीसी पैलेस्टीन में वी नो लाइक जेनोसाइड काइंड ऑफ थिंग्स आर गोइंग ऑन, राइट? इनका बहुत लोकेशन बेस्ड इश्यूज भी आ रहे हैं, दे वर पुश बैक, ओके? सो अकॉर्डिंग टू रोम स्टैट्यूट द लोकेशन ऑफ वेस्ट बैंक, ओके, एंड ऑल्सो गाजा एंड अलॉन्ग विद दैट ईस्ट जेरूसलम भी उनको पैलेस्टीन लोगों को दे दिया है, बट now Israel is pushing them back and they are almost like wiping out completely the Palestinians, right? So that was the issue that have been escalated, and how that is how the ICC have been provided the arrest warrant to him, ठीक है? But the thing is like arrest warrant cannot be one particular thing that will be convicting the things, ठीक है? arrest warrant तो दे दिया है, but it is not binding because conviction he had to be convicted, ठीक है? So that is the issue here, and along with that what we have to see here is जनरल असेंबली में अगर उन्होंने आ रहे हैं तो ममदानी ने बताया था कि we will be arresting him if he is coming to the New York for this UN General Assembly, but it is not supposed to happen, and it is not the legitimate way also to do it, ठीक है? So अभी हम देखेंगे तो इन्होंने भी बोल दिया, prosecutor himself is having a crime scenes and everything, right? He have done so much of crimes. It is not necessary for us, but we have to understand कि ICC और the difference between ICJ also, ठीक है? इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस, ठीक है? सो ये यूएन के थ्रू है, ठीक है? वो रोम स्टैट्यूट के थ्रू है, ठीक है? दे विल बी वर्किंग अपॉन द इंडिविजुअल्स हु हैव डन इट, बट आईसीजे विल बी वर्किंग अपॉन द कंट्रीज, ओके? जिन जो कंट्री उनको मतलब दूसरी कंट्री को वो परेशान किया है, जो भी है, ठीक है? व्हेन इट कम्स टू द मनी लॉन्ड्रिंग और व्हेन इट कम्स टू द वॉर्स और illegitimate attacks, all those things, ठीक है? illegal attacks and everything, so they will be taken care by whom? The International Court of Justice, ठीक है? दोनों हेग में ही है, ठीक है? दोनों जहाँ हेडक्वार्टर्स एक ही जहाँ पर है, ठीक है? हॉग, एंड that's it with these things, ठीक है? सो अभी हमें क्या करना पड़ेगा, वही वी आर रीडिंग अबाउट इट, क्योंकि इसराइल और पैलेस्टीन के इशू में इंडिया का क्या लेना देना है व्हेन इट कम्स टू अरेस्टिंग ऑफ द इसराइलियन प्राइम मिनिस्टर. सो द प्रॉब्लम हियर, इंडिया में अभी, ओके, इंडिया इज नॉट अ सिग्नेटरी ऑफ रोम स्टैट्यूट, ठीक है? सो इंडिया अगर, ओके, पहले इंडिया का मेजर स्टेट ये है टू स्टेट theory, right? When it comes to Israel and Palestine, so they have to be settled down and they have to coexist with each other peacefully, right? But the thing is like when it goes on like this, when the Israeli prime minister have been arrested, okay, so what it will be showing that ki it is being harsh on one particular country, and it will be having like he is not a signatory also, right? Israel is not a signatory as well, so how can they can arrest them, right? So one part is that, and also along with that, in this case, if he have been internationally convicted that with any matlab, if he has internationally convicted with the crime, okay, and if he have been punished, then India has to go with certain relations cut down from Israel also, first thing, and second thing, सो इंटरनेशनल ऑर्डर के साथ साथ हमारी इंटरनेशनल फॉरेन पॉलिसी भी हमें थोड़ा सा ऑल्टर करना ही पड़ेगा, राइट? सो फॉरेन पॉलिसी में फिर वी आर गोइंग फॉर, ठीक है, मान लो बाकी जहाँ हमसे प्रेशराइज करने लगे कि यू आर टेलिंग दैट दे वांटेड टू बी कोएग्जिस्टेड पीसफुली, बट अगर वो अरेस्ट हो रहा है तो उसके लिए आपको क्या करना पड़ेगा? मतलब गोइंग विद दैट वी हैव टू कंपाइल विद आईसीसी ऑल्सो. लेकिन आईसीसी में कंपाइल करने के लिए क्या दिक्कत है, क्योंकि हमारी इंडियन जुडिशरी का सॉवरेनिटी भी इसमें डिपेंडेंट हो सकता है. दे मे बी, ओके, देयर मे बी अ प्रेशर, सो दैट विल बी इम्पैक्टिंग इन आवर सॉवरेनिटी, ठीक है?
हमारी ऑटोनॉमी को भी उन लोगों ने थोड़ा सा अगर प्रेशराइज होने लग गया तो इट विल बी इम्पैक्टिंग ऑन आवर ऑटोनॉमी एज वेल, ठीक है. सो कंपाइलिंग टू आईसीसी इज अ major issue because we have to compromise on certain grounds where we will be we will be compromising on internal judiciary process and also internal things, ठीक है. सो हमारे सॉवर्निटी के लिए प्रोटेक्ट करने के लिए व्हाट वी हैव टू डू, वी कैन नॉट गो फॉर आईसीसी, ओके. इन इवन दो इफ वी आर गोइंग फॉर इट, देयर वी हैव टू मेक श्योर दैट शुड नॉट बी अफेक्टिंग आवर ऑटोनॉमी, ठीक है. अगर वो कोई भी इंटरनेशनल क्राइम पर्सन इज कमिंग फॉर इंडिया टू हाइड एंड एवरीथिंग, at that time India can help to get them and give, right? but we should not be going for like हमारी procedures वगैरह डिस्टर्ब नहीं होना चाहिए, ठीक है. so foreign policy making में it is necessary to like UN पोजीशन में हमें जाना और UN में वो परमानेंट मेंबर बनाना, ये सब चीज के लिए दे विल बी pressurizing us to go with the compliance of the ICC and ICS. वहाँ पर we have to be very clear about it. इंडिया का foreign policy should be friendly with nations, okay, and it should be a open hand with other nations, but it should not be like sovereignty और autonomy को कहीं पर भी दिक्कत नहीं होना चाहिए, ठीक है. so that is what the major thing here we have to focus, ठीक है. otherwise इसमें ज़्यादा दिमाग लगाने के लिए कुछ है नहीं, ठीक है. it is only about India and its foreign policy, how it have to be designed, ठीक है. सो इंटरनेशनल रिलेशंस में भी आप ये एग्जांपल्स यूज कर सकते हैं, ठीक है. और इसके अलावा एसए पेपर्स में, क्योंकि इफ यू सी देयर इज वन पॉसिबिलिटी, ह्यूज पॉसिबिलिटी व्हेन इट कम्स टू essay paper, they may ask India's relations or India's global voice, how it have been taking a stand, because हमें कई बार देख पा रहे हैं nowadays the globe is going with so much of conflicts and wars and everything, right? so अभी यूक्रेन में भी राइट ईरान ने मतलब अटैक करने लग गया, राइट. सो कैस्पियन सी का भी लोकेशन आ गया है न्यूज़पेपर में, एक बार देख लेना, ठीक है. सो दीज आर द थिंग्स दैट इज शोइंग अस हाउ वी हैव टू बी लाइक फॉरेन पॉलिसी को कैसे डिजाइन करना है, ठीक है. एंड अलोंग विद दैट with the persisting okay with the persisting issues, okay, when it comes to the issues that is glowing around us sorry going on around us globally, so usko tackle karne ka without taking a biased stand, okay, and along with that maintaining the stability in Indian economy also, how we can be resilient. so in this genre we may have a question, so please read all those articles and also please do read about this international events also that will be helping us, okay. so that's it with the day, okay. in case if you have any doubt, okay, please comment box में आपका query drop कर लेना, ठीक है. from now on we will be connecting completely, ठीक है, ठीक है. and along with that if you have any issue please let us know, we will be there to help you out in the concepts, ठीक है. clear? so that's it for the day. thank you so much, thank you for joining. so we will see in another day, ठीक है. एंड पीडीएफ आपको शाम तक मिल जाएंगे, ठीक है. टेलीग्राम चैनल में ही मिल जाएंगे विद डिटेल्ड एक्सप्लेनेशन एंड एवरीथिंग. यू डोंट वांट टू बी वरी अबाउट इट, ठीक है. चलिए न्यूज़पेपर रीडिंग को स्किप मत करिए, प्लीज डू रीड द न्यूज़पेपर, ओके. एंड अभी कॉमनवेल्थ में भी राइट वी गॉट द वेट लिफ्टिंग में गोल्ड भी हमें मिल गया है एंड ऑल्सो वी गॉट अ सिल्वर ऑल्सो, राइट, ठीक है. so please do read about it, how commonwealth games are going on everything, ठीक है. so these you can just read about the newspaper, first page में ही है, just read it. मेरा भाई ने ले लिया, ठीक है. okay, thank you Arvind, thank you Prachi, thank you Bhushan, thank you for joining, have a very nice day, ठीक है. thank you.